Good afternoon, dear students. Earlier, we discussed about Basidiomycota and subphylum Agricomycotina and Puccinio-mycotina. We already discussed in previous class. Then, now we discussed about Astileginomycotina. Am I audible? Am I audible, Kiran? Can you answer by chat? Okay. So, a little bit discussion Basidiomycota. Wherever we discussed in previous class, general characteristics produce sexual spore, basidiospore on the outside specialized spore producing structure called basidium. So that's why called is Basidiomycota because of its basidia are club shaped. Basidium, club shaped structure known as basidium. So that's why known as Basidiomycota. A typical basidium is a club-shaped structure bearing especially four basidiospore on pointed projection called sterigmata. Basidiospore are haploid, uninucleate and the result of plasmogamy, karyogamy and meiosis. हम बात कर रहे हैं ओनली बेसिडियोस्पोर्स की. बेसिडियोस्पोर कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, यूनिन्यूक्लियोट होता है और कब प्रोड्यूस होता है? whenever plasmogamy, karyogamy and meiosis, then after produce basidiospore. Dikaryotic phase dominant in the life cycle. Ascomycota and Basidiomycota both are dikaryotic phase. Presence of clump connection on the mycelium. Presence of dolichoseptum except in rust and smut. Absence of motile spore. Thallus is septate mycelium. Sexual reproduction by spermatization and somatogamy. We discussed earlier. Then today, phylum Basidiomycota, subphylum Astileginomycotina, in which systemic positions phylum Basidiomycota, subphylum Astileginomycotina. Here, two classes. One is Astileginomycetes and second is Exobasidiomycetes. First class Astileginomycetes and second is Exobasidiomycetes. Here, class first, two orders. First order Astileginal and second order Urocystidales. Family Astileginaceae, genus Astilego, family Urostidaceae and Urostis genus. Here, class 2 Exobasidiomycetes in which order Tillaceales, family Tiliaceae and genus Tilacea. कुछ नहीं है इसमें. सिस्टमिक पोजीशन में क्या होगा? फाइलम बेसिडियोमाइकोटा है, सब फाइलम अस्टिलेजिनोमाइकोटिना है. दो क्लास होगी. फर्स्ट क्लास अस्टिलेजिनोमाइसिटीज है एंड सेकंड एक्सोबेसिडियोमाइसिटीज. अस्टिलेजिनो में अस्टिलेगो है और यूरोस्टिस है, जबकि एक्सोबेसिडियम में टिलेशिया है. दैट इज कॉज बंट एंड दैट इज कॉज्ड स्मट डिजीज. Many disease caused by this phylum, this subphylum, like loose smut of wheat, Astilagonudatisae, like Sperotheca, Spacilothica sorghai, grain smut, Spacilothica curenta, Spacilothica liliana, ज्वार, Tolyposporium ehrenbergii, loose smut of ज्वार, and Tolyposporium penicilliarii, smut of bajra. So many disease caused Astilego. Important characters of order Astileginales. The fungi included in this order are popularly called as smut fungi or bunt fungi. The smut are called because of the form black dusty spore masses. हम बात करें स्मट की. स्मट क्या है? ब्लैक डस्टी पाउडर. क्लेमाइडोस्पोर, टिलिटोस्पोर भी कहते हैं, स्मट स्पोर भी कहते हैं. ओके. स्पोर, ब्लैक
स्पोर कहीं भी मिल सकते हैं आपको, लीव्स में, स्टेम में, फ्लावर में, होस्ट प्लांट के। टीलियोटोस्पोर कहीं भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, लाइक दैट एम्ब्रियो इन्फेक्शन। लूज स्मट ऑफ व्हीट इज अ बेस्ट एग्जांपल। लूज स्मट ऑफ व्हीट cause embryo infection. It is an internally seed-borne disease. Then floral infection, pearl millet of smut. Pearl millet of smut always infect floral part of pearl millet. Then seedling infection, flag smut of wheat, in which infection mainly seedling conditions. And sugarcane smut, yani wheat smut, soot infection. This is example of soot infection. So many ways this is infection. This order also include a group of fungi, Basidiomycetes, yeast, because of in which sexual reproduction like that budding. So Basidiomycetes, yeast also include. All smut fungi are facultative saprophyte. Most of smut fungi are obligate, but smut of mage is a facultative saprophytes. The mycelium is intracellular, except Astilegomedis is a intracellular, not have hosteria. The primary mycelium originate from germination of Basidiospore. Primary mycelium कहाँ से originate होगा? जैसे ही वो Basidiospore germinate होंगे, then promycelium arise होगा. It become dikaryotic. No tertiary mycelium requirement, because only mushroom requirement tertiary mycelium. Here primary and secondary mycelium required. Yeast-like cell which reproduce by budding or produced. Clump connection are present while dolichopore septum is absent in Astilaginous group. Chlamydospore are formed from intercalary cells, means formation of chlamydospore also. Asexual reproduction is by means of budding or sporidia, producing secondary sporidia, also called as a conidia. Sexual reproduction किससे होगा? Budding से. No sexual organ are produced like that Oomycota, Ascomycota. Oomycota में क्या था? Sex organs थे, antheridia था, and oogonia. Here not like this. Plasmogamy take place by fusion of any two basidiospore. Here simply sexual reproduction. Basidiospore से दो basidiospore का fusion होगा, positive और negative का. Then somatic hyphae may also fuse, result in dikaryotic conditions. Next, the basidium promycelium may be septate or aseptate. If promycelium is septate, then called Fergamobasidium, and non-septate Holobasidium. Maybe bear 4 or many sporidia. Minimum 4 sporidia तो होंगे ही basidiospore में, but maybe many sporidia. Formation of teliospore. This is a resting structure. Teliospore are characteristic structure the order. These are formed in masses in sori, developing in various places like flower, leaves, stem, embryo, shoot, many parts. They may be reticulate, spiny, tuberculate, or smooth. And round shaped globules, sessile, one celled होंगे, स्पाइनी होंगे यानी हेयरी ग्रोथ होगी, variously colored like brown, black and yellow. The spore ball have fertile and sterile cell with fertile cell capable of germination. Here is important characteristic of Astilagenaceae and Tilacinaceae. You have clear difference. You have seen clear difference between germinating teliospore fungi and one second. This is a smut fungi. This is a bunt fungi. In which non-edge smut fungi, non-edge bunt fungi. Promycelium is septate होगा. Here non-septate. Promycelium, this is a teliospore. You have clear seen this picture. This is a teliospore. Then teliospore arise germ tube. This is a promycelium. Then germination. This is a promycelium.
Germ tube, this is a septate. The septate known as a Fergamobasidium. Here, no septation, Holobasidium. Septation, Fergamobasidium, and this is a no septation, Promycelium, Holobasidium. Basidiospore are produced laterally from each cell of the Promycelium. Here you can see this is a laterally यानी साइड से निकल रहे हैं इसके बेसिडियोस्पोर्स, वेयर इन केस ऑफ टिलेशिया बेसिडियोस्पोर अराइज टर्मिनली, ओनली टर्मिनली यानी अपर सरफेस से निकलेंगे. हियर इज ओनली 4 बेसिडियोस्पोर, बट दिस केस 4 or many, even out of 10 basidiospore arise of Holobasidium or Tilacea family. You have clear seen this picture. This is a loose smut of wheat. Teleospore. This is a black smut, black spore, black masses of powder is a teleospore. What happened? Replace kernel with spore masses. यानी जो आपका गेहूं का दाना है वो किस में बदल गया है? Black चूरमा, black masses of powder. This is a teleospores. Astilagomydis, in which you have clear seen this picture. If you go field, wherever you can identify easily, this is a smut disease of Maydis. This is also teleospore release. All kernels, all seeds replace to black spore, black masses of powder. You have clear seen this picture. No kernels, only black powder masses. See in this picture. Here we can talk what is loose smut of cereals, loose smut of wheat disease cycle. What happened in this? Loose smut of wheat is an internally seed-borne disease. Infected seed is planted. इसमें क्या होगा? सबसे पहले हमारा seed infected होगा, embryo infection होगा, internally seed-borne disease है. Wherever you grow in field, the seed grow as well as mycelium grow with systematically inside the plant. दोनों एक साथ grow करेंगे. Fungus grows systematically, eventually invade head of and kernels. साथ साथ में ग्रोथ रहेंगे. आप फील्ड में देखोगे, प्रैक्टिकली मैंने देखा है, जब आप फील्ड में जाओगे तो ऐसी बालियां कुछ जल्दी ईयर फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा देन अदर्स. देन फ्लोरल पार्ट अफेक्टेड होगा, इन्फेक्ट होगा, एंड कर्नल्स जो आपके गेहूं के दाने हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स में. वेरेवर लूज स्मट ऑफ व्हीट इन विच विंड is a very important role for dispersion the teleospore to infected plant to healthy plant. Here is no secondary infection. This is a monocyclic disease. Monocyclic disease means no secondary infection. Only primary infection take place. Healthy plant, by wind, teleospore or masses of black powder is by wind, through wind, spread infected plant to healthy plants. These spore blow away wind to adjacent यानी नियर प्लांट्स में इन फील्ड में इन्फेक्ट करेगा. स्पोर लैंड करेगा ऑन फ्लावर हेल्दी प्लांट में, जर्मिनेट होगा और इन्फेक्ट करेगा एम्ब्रियो को. इन्फेक्टेड सीड इज हार्वेस्टेड. हम क्या करेंगे? इन्फेक्टेड सीड को हार्वेस्ट हो जाता है वो. इन्फेक्शन इज नो विजिबल. Whenever attack on healthy plant, then what happen? Germinate and infect embryo. Whenever infected seed अपन हार्वेस्ट कर लेंगे, थ्रेसिंग हो जाएगी. थ्रेसिंग के बाद में हम जैसे ही वापस ग्रो करेंगे, then disease appear. Here is covered smut is same here. Tilacea cariaceae, in which Tilacea cariaceae, in which same here. In this also we showing the plant. This is a seed and soil borne disease. Whenever we grow seed,
with the whenever grow with the seed with the in the field, then also germinate and अपन यहाँ देखेंगे एक सेकेंड, सीड जर्मिनेट होगा, देन इन्फेक्ट करेगा वो प्लांट को, देन डाइक्यूरेटिक हो जाएगा, टीलियोस्पोर प्रोमाइसिलियम अराइज होगा, प्रोमाइसिलियम अराइज होने के बाद में दिस इज ए प्राइमरी स्पोरिडिया एंड दिस इज ए सेकेंडरी स्पोरिडिया. प्राइमरी स्पोरिडिया इज ए शिकल शेप H-shape structure. You have clear seen this picture. This is a primary sporidia, and H-shape is a typical character of this Tillacea. Not H-shape formation in Astilego, only in which Tillacea H-shape structure. Basidiospores, positive and negative fuse, then H-shape appearance, and secondary mycelium arise with क्रेसेंट शेप यानी अर्धचंद्राकार शेप में होगा, एंड देन सेकेंडरी इंफेक्शन इज कॉज्ड डिजीज इन विच सीड्स ग्रो होगा एंड mycelium also grow with the systematically in plant, systematically infected plant from partially smatted grain. टीलियोस्पोर रिलीज होंगे ऑन थ्रेशिंग के टाइम, कंटेनिंग सीड एंड इन्फेस्ट सॉइल, सीड में या सॉइल में रह जाएंगे बिकॉज ऑफ सीड एंड सॉइल बॉर्न डिजीज. टीलियोस्पोर जर्मिनेट होंगे विद सीडलिंग, प्रोमाइसिलियम अराइज होगा, प्रोमाइसिलियम में प्राइमरी स्पोरिडिया बनेंगे, प्राइमरी स्पोरिडिया का फ्यूजन होगा, आफ्टर देन फ्यूजन देन सेकेंडरी स्पोरिडिया एंड सेकेंडरी स्पोरिडिया इन्फेक्ट अगेन सीडलिंग प्लांट्स. Here is many diseases, Nivosheva also, Nivosheva indica. So there are simply characteristic of Astilegion Mycotina subphylum. Here is comparison of rust and smut fungi. Uridinals टीलियोस्पोर टर्मिनली होंगे, जबकि टीलियोस्पोर इंटरकैलरी होंगे स्मट में. बेसिडियोस्पोर 4 discharge from sterigmata and actively. Wherever Astilaginals, Basidiospore variable in number may be 4 or maybe many, 4 to more. Not on sterigmata, not discharge actively form. Spermognia produce dichrotic stage. No spermognia, no dichrotic stage arise from fusion of two compatible cells, two different mycelium, positive and negative. Clump connection absent, clump connection is common. Many species require two hosts for complete life cycle, and never require two hosts. This is require alternate hosts like Burberry, Mahonia, Thalictrum. And this is a polymorphism. This is a macrocyclic, and most species unculturable, artificial media, most species really culturable because of this obligate parasite. Totally इन्फेक्शन यूजुअली लोकलाइज्ड होगा रस्ट में, जबकि यहाँ सिस्टमिक होगा, स्मट में सिस्टमिक इन्फेक्शन होगा. टीलियोस्पोर्स इन टीलियल सोराई यूजुअली ऑन स्टेम, लीव्स पे करेगा मेनली. यहाँ पे किस कहाँ होगा सबसे ज्यादा, ओवरी और एंथर पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होगा. अटैक फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अटैक ओनली एंजियोस्पर्म. रस्ट को हमेशा किसकी जरूरत होगी, अल्टरनेट होस्ट की, जबकि एस्टिलेगो को स्मट को अल्टरनेट होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. पॉलीमॉर्फिज्म है बिकॉज ऑफ 5 स्टेज रिक्वायरमेंट, जबकि यहाँ कोई ऐसा स्टेज नहीं है. दिस इज अ मैक्रोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक. पॉलीसाइक्लिक मीन्स देयर इज सेकेंडरी इन्फेक्शन, देयर इज नो सेकेंडरी इन्फेक्शन. दिस इज टेक्निकल टर्म्स. सो आई थिंक ऑल थिंग इज क्लियर. Any query?